Yeah. What you need to do is put that person over there. Is he coming? Is he coming? Do you know when? When's he coming today? Yeah, I guess. Any idea of time? I don't know about the time though. He's lurking around somewhere. But he might have found a fridge. Tomorrow. He might have found a fridge by now, so you never know. All right. If not, we'll find him one. Perfect example of the British sense of humor. Here we can see Dan and his daughter Ren have come here with Boris Johnson, and what is it that they want to say? What message do they want to put across to Boris Johnson? Not just to Boris Johnson perhaps, but to the larger world as well. Let's speak to Dan below. Dan, thank you for speaking to us. This is very fascinating and it has some connotations in India. Yeah. What is it that you're trying to tell the world through the poster? I suppose it is inspired by Gandhi, the wise man. Boris Johnson sees himself as a wise man of history, but he's a fool and a hypocrite. And he does nothing. He sees the world suffering, he hears the suffering of his eyes, and he laughs, he just laughs at it. He's a hypocrite and a liar. I'm very angry with this man and the hypocrisy, how he's got the, without shame, stand in front of the world and tell them that they should cut their emissions when the only thing is the pain. The complete opposite of everything this is supposed to be. So Dan's problem here is that UK is trying to preach, but they're not setting their own house in order. Am I right? Absolutely, total hypocrisy. And this is so typical of Boris Johnson. He lies, he deceives, he dissembles. Right, well those are very strong words of course, but that is the feeling of protesters who are coming here. We'll also speak with Ren, Dan's daughter, and
and know what is it that she has to say on the climate summit and what the politicians are doing, or rather not doing, to arrest the climate change. Then what is it that you want to tell us? I'd like to say that I agree with my dad in the sense that the UK is saying that they'd like the other world to change, but they're not doing anything themselves. I think that's quite bad, because like if you speak to children my age, they kind of have a loss of hope of what's going to happen, and I don't think that's right. People even younger than me, they just think, oh, the world's going to get hot, ice caps are going to melt, and they don't think that the UK is making enough changes. Right, so as you can see, the principal connectors for c'est vrai que plusieurs ponts, plusieurs artères sont complètement fermées, bloquées à la circulation, ce qui est forcément complique les choses. Il faut bien savoir, rendez-vous compte qu'il y aura 38 personnes qui sont prévues à circuler à Glasgow. Il n'y a que 14 000 chambres d'hôtel disponibles dans la
That's right. Not ready. Je le garde avant. Azért akartam ott megállni azon.
Back on the skate surface. Yeah. That's where I've got full props. Like, I've learned nothing.
that's exactly what they're doing in London. Keep it clean. Anybody that's been a sanitation come this way? Anybody with a sanitation come this way? Sir, can you wait there for me, please? Okay. Went a different way then, or it's going over there? You know, we're going to check on something. It'll take like 10 minutes, okay? Oh, could I for your just own personal safety. Yeah, no, I'll just walk a different way then, thanks. Can I go up? Not yet, sir. About 15 minutes, okay? Just step back for us a little bit for me, sir.
Perfect. Right. Take a left and a right and a white candle. Hi. Alright, look. Yep. Right. And invitation. Perfect. Come back to you, please. So we have to find the passport. Right, just go through here, look at left, then right, the white tent at the top. Thank you. Bye. You can get in. Just because I'm like, No, I appreciate that. Just going, where do you work? I'm out at this. In the other turn. Hello. You can't go this way, sir. That's why we're here. Sir, can't go. Ladies and gents, you can't leave through this way at the moment. Just hold on for a second. No, it's walking there. Alright. Because I want to wait for each other. I can get it if you want. What is one of this one? I can't What is perfect? Oh, that's fine. further down, mate. As you go down to near where the sun. I know how to get in here. Yeah. Just go up with them and I'll let you in. Yeah, through there. Hi guys. Perfect test and we're good to go. It's currently blocked off. All clear. Hi. Thank you very much. I'll just go find a cafe and pitch up. Perfect. We've been stopping everything. Yeah, alright, have a good one. J'ai vraiment fait ça par contre. Oh, il y a un d'un cours de ça. Ce métier, il vous empêche de dormir. C'est abominable.
Ahí está la estación, mira.
supposed to be funded for a walk. After the Muslim prayer, we will all now be seated in our original position, so you're all where you should be. This will be followed in the vigil by a minute's silence after all of the prayers, which I will have introduced one by one, and by the closing statement from myself and Rose. That will be the end of the vigil. It will take approximately 50 minutes, and I realise it's a long time to be sitting out in the cold, but because you're all here supplicating and praying and all the rest of it, I kind of have faith that you're going to be able to keep the rain off, because it's going to be pretty horrendous for you all if it's pouring rain. Just want to get that out there so you're prepared. And if anyone has forgotten their black umbrella, we have some additional ones. So can I just see a wave of black umbrellas? So if it really does pour rain, just stick up your umbrella, you'll be all right. Great. And if anyone doesn't have a black umbrella, raise your hand and we can easily get, ooh, right, there's not too many, so we probably, Magdalene, if you spot the hands with no black umbrellas, that would be amazing. Magdalene, black umbrellas, just to say there's a few hands up with no umbrellas. You've noted them. Fantastic. Just if it rains. Giles. Yes, there is a hashtag for this event. And Jill has got the hashtag for this event over there. Hashtag COP26. Living in India and facing the dire consequences of farming, which is nothing less than giving up their lives through suicide. And also, they get harassed non-stop by the financial institutions, by the organizations which try to take away their crops. I won't go into much of the details, just wanted to highlight that since 1997, things must have been going on before that, till 2021, things have only gotten worse. With the current laws, they are going to get worse. Speakers before me have said enough about it, so I won't go a lot of detail in it, but I think what we need to do is raise our voice in the form of some slogans, so all those who can hear us at least know what is happening here. Are you in for that? Yes. Right. Kisan Ekta Zindabad! 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 Kisan Ekta Zindabad! 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 Come on guys, Kisan Ekta Zindabad! 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 Kisan Ekta Zindabad! 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 Kale Kanun वापस लो! वापस लो! वापस लो! Kale Kanun! वापस लो! Kale Kanun! वापस लो! Kale Kanun! वापस लो! Kale Kanun! वापस लो! Save farmers, save India! Save farmers, save India! Save farmers, save India! Louder please! Save farmers! Save India! Save farmers! Save India! Save farmers! Save India! Sade hak! Aithe rak! Sade hak! Aithe rak! Sade hak! Aithe rak! Sade hak! Aithe rak! Kisan Ekta! Zindabad! And lastly, an anthem which we always do when we are in protest, it is about Azadi. Are we in for that? So all you have to say is Azadi. हम लेके रहेंगे
सब मिलकर लेंगे, सबके लिए लेंगे. We will get freedom. We will get it. Azadi is freedom. We will get it. For our farmers. हम लेकर रहेंगे. हम सबके लिए. हम लेकर रहेंगे. तानाशाही से. अरे भुखमरी से. अरे भुखमरी से. अरे जातिवाद से. अरे बेरोजगारी से. हम लेकर रहेंगे. Thank you very much, everyone. And we can't do that alone, so now I'm going to call one young sister, Kiranji, and then we'll be calling a few more yet. Right, good afternoon. Thank you so much for letting me speak today. I'm Kiranjit Kaur from the Kaur Farmers Organisation. So if you go onto Instagram, K-A-U-R Farmers, Kaur Farmers. We've been sleeping out and demonstrating for the farmers for more than 6 months now in London and Birmingham, England. So we drove up yesterday, we joined the protest yesterday, and we're here today as well. Now, I'm really, really pleased to see the turnout today. Really, really pleased. So thank you so much to every single one of you and the Indian Workers Association. We've met you guys down in London as well. So thank you so much. So Kaur Farmers, what do? We've got a global farmers meeting. We had one in September, 30th of September. We had Jeremy Corbyn, we had Claudia Webb, MP, and we had a few other activists, Jinsy Singh from Culture Aid and so on. We all got together and we said, right, what are we going to do about this? This was in September before even the Lakhimpur incident. And obviously we came up with some really, really good action points. We had Land Workers Alliance with us, Joseph Fernandez, which is a British farming union. They are in very big support of the Indian farmers. So the next one is on the 22nd of November. Please do follow us, Kaur Farmers, and come online. We've got Rakesh Tikait, the union leader in India, one of them anyway. Preet Gill, MP, as well as Zara Sultana, and Aziz Kaur, a journalist on the ground on the Tikri border, the Gaza border, and the Singhu borders. She reports every single day, so please do come online to that. So I also wanted to just mention, because Faji just mentioned it just now, the suicide problem. 28 a day a couple of years ago, a report showed, was dying in India from suicide. Farmers, 28 farmers. Okay, now that number is probably higher in 2021. Let's be honest about that. My mummaji, my dear uncle from my mother's side, we lost him to this illness. But it's not an illness in India. It's the government doing it to them. So I really wanted to mention that point, and I want to thank Faji for bringing that point up, because it's really, really important. And over 650 have now died. On the streets of Delhi, 650 farmers have now died in the 11 months, it's nearly 1 year soon, that they have been out on those streets. So I want to just pay tribute to those 650 men and women and children that have died. And then Lakhimpur, I wanted to mention this because no one's really gone into detail, which is that this incident, when it happened in London and a man's jeep ran over people on a London bridge a couple of years ago, we called that terrorism in the United Kingdom. Lakhimpur, by the son of a minister of the Indian government, that was a terrorism by the government. We have to call it by its name. That was terrorism. So that's when we say fascism. We use that word a lot, by the way. When you go to protests, we call so-and-so fascist, Trump was a fascist. When we're talking about Modi and the BJP, this is the real fascist. We're talking extremely dangerous. And Hitler, the group of the Nazi Party and Hitler, were inspired by RSS. We're not talking about a group that was inspired by the Nazis. We're talking about the Nazis. Adolf Hitler was inspired by the RSS. If you don't know your history, look into Peter Friedrich. He's documented it very well. Fascism that inspired the German Nazi Party was inspired by these people, the RSS, that is behind the BJP, the paramilitary part of that government. So I just wanted to make sure that you're aware of that. And the Preeti Patel, we need to be really careful in this country, because her links with the RSS is very, very concerning, and we are very concerned about Preeti Patel, Rishi Sunak's collusion with the Indian fascist government. We really need to hold our
politicians to account, which is why that meeting is happening. Okay, the 3 bills people have talked about, so I'm not going to go into that too much. But the deportation that we mentioned, I'm coming up to my final point now. The deportation of Indian citizens that are from Britain, from USA, and so on. That's not going to scare us. You think that's going to scare us? My Nana ji and my other Mama ji are still in India. I probably won't be able to go see them after all the demonstrations we've been doing since 6 months ago. That's not going to scare us. That's going to make the lions and lionesses roar louder. We are going to stand even more. You try and deport us, we are going to stand up in more numbers. That's why I'm so pleased to see so many of you here, so thank you so much. So this is my last point now. It doesn't matter if you're in Glasgow or Delhi, say it with me, no farmer, no food, no farmer, no food. Kisan Mazdoor Ekta, Kisan Mazdoor Ekta, Inqilab, Inqilab, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Well done. Yeah, big round of applause. Absolutely. Brilliant. Right. I'm going to ask Comrade Keith to say a few words, and can I ask Sarjeet Kaur to be coming closer as well, and to be here next. Thank you, Comrade. Afternoon, brothers and sisters, comrades and friends. I'm here to bring solidarity greetings from the Communist Party of Britain. We are familiar with the struggle in India through the reports that appear in the Morning Star regularly, probably the only paper that properly covers the situation in India as it stands just now. Farmers are not actually owners of the land, they are merely custodians. They know how to look after it, they know they need to look after it for the future. We expect from governments they will provide us with security, and the most basic security we should expect from our governments is food security. The right to food. Food is not a luxury, it should be there for all. Modi is not coming to Glasgow in order to protect India, he's coming to sell Indian land to the highest bidder. He's coming here to discuss with the corporations handing over, who have no interest in the long-term future of the land. They will introduce genetic modified crops, they will not do crop rotation, they will go for large, whole-scale farming that is the most profitable, not that which is the most nutritious and that which will enhance people's lives. And once they have raped the land, and once they have got their profits, which will not be spent in India, they'll be transferred elsewhere, they will leave and look for the next place to pillage and rape, similar to what the British Empire did throughout its history. And if you think the Town Hall, City Chambers here looks good, it's a fine building, but it's worth noting that it was built on the back of the exploitation of the colonies, including India. It was Indian tea, it was Indian cotton, all those things were brought over here, exploiting it. It may not have been slavery as such, but the Indian people were treated as slaves and exploited. For that, we can only apologise and say that the Communist Party has stood for Indian independence. We've stood on the side of Indian workers and farmers, not on the side of the Indian boss class. So, thank you for giving us the opportunity to salute you. So, I think it's correct to say, love salute to you all. Thank you. Thank you very much. Right, I'm now going to ask Sarjeet Kaur. She's done great mobilisation for this, as you can see by the number of ladies that have turned out. So thank you all of you for turning out. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सॉरी मेरी आवाज़ आज थोड़ी खराब है। हाँ जी ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
कमज़ोर कौम आ, असी कमज़ोर नहीं, साडी गिनती बेशक घट होवे पर साडे गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी सानू इन्नी बख्शिश आ, असी एक एक भी हज़ारां हज़ारां नाल लड़ सकते हैं। साडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने ये करके दिखाया और असी भी लड़ सकते हैं। उन्हां दा ही हथ साडे उत्ते आ, उही शक्ति साडे विच भी आ। तुसीं सानू कमज़ोर ना समझना। बाकी जो भी इंडिया दे विच भैण भरा किसान साडे सुण रहे आ, सानू किसी गल्लों भी घबराउण दी लोड़ नहीं। असी जो भी इत्थे आ, असी तुहाडे नाल मन तन धन करके तुहाडे नाल खड़े आ। जिस कासे तुहाडे सानू जिस तरह भी साडे कोलों तुहाडी हेल्प कर हो असी कर सकते हैं। मैं सॉरी मैं ज़्यादा नहीं कह सकती। आवाज़ मेरा साथ दे, मेरिया भैणां दो किनारे लाउगियां, सारिया ने रल मिल के बोले किसान एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, आगी होया मोदी मोया, आगी होया मोदी मोया, मोदी सरकार जिंदाबाद। आखिर में मैं बेनती करती हूँ फतेह का जवाब फतेह विच देण दी कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे ने सुन ही लिया है जो साडे पहला भैण भरावां ने बोल दिता हैगा, उन्हां ते हुण जाण दा मैनूं कोई टाइम वेस्ट करन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। आप ये जानी जान हो के सच्चे पातशाह ने सानू ये भी कोई बद मिली हैगी, सारे साडे आपस विच मिलण दा कोई तरीका बना दिता है। मोदी अज आ इत्थे गया हैगा पर उसनू असीं नोट वेलकम कहंदे हां। असीं मोदी दा कोई सत्कार नहीं कर रहे हैगे। मोदी नू ये साडी वैसी जान दे जानी चाहिदी हैगी आ। इत्थे दी सरकार साडा साथ बहुत दे रही है। साडे गुरु घरां विच उसनू कोई लोड़ नहीं कम आके मत्था टेकण दा। उसने ये कहा सी मैनू बड़ा सुकून मिलदा, मैं गुरुद्वारे जाके मत्था टेकदा हां। मोदी जे तू साडे पंजवें गुरां दी सुखमनी ਸਾਹਿਬ ਦਾ पाठ बह के किते चौकड़ी मड़ के सुन लवे तेरी ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ रूह शांत ਹੁੰਦੀ है, तेरा दिमाग भी ठीक हो जाना हैगा। मैनू पता नहीं तेरे दिमाग विच की बड़े, तू सुत्ते दा सुत्ता ही रहना है। तू अपने कोलों तां कोई भी कुछ नहीं कहंदा, सच्चे खब्बे ही लैके उन्हां दे चमचियां दे नाल ही तू अपना जो प्रोग्राम बनाना है। पर तू जे ते हिम्मत हैगी आ, असीं छड़ेआम खुले हवा दे विच खड़ के तैनू असीं चैलेंज करदे हां, जे तू साडे वांग अपनी सिक्योरिटी लैके भी सानू इत्थे दर्शन दे देवे। असीं साडे नाल कोई सिक्योरिटी नहीं हैगी, असीं कोई सिक्योरिटी नहीं चाहुंदे हैगे। साडा इह ही आ, साडा गुरु ही राखा है। असीं हत्थ ते जान तली ते जान रख के आए हैं। तू एक बारी सिक्योरिटी देना सानू उपरों देख ला, अपने हेलीकॉप्टर सानी ही देख ला, सानू असीं की करना आए हैगे आ। मोदी तैनू शर्म होनी चाहिए है, तेरी इन्नी बेइज्जती हुंदी हैगी। तेरे कंन ते जू नहीं सरकदी, तेरे जूआ होण तां ही सरकण, तेरे सुत्ते नू नीरे नहीं आउंदी हैगी। तू कर की रिहा हैगा जे मोदी ते अपने आप नू को समझदा हैगा। असीं ऐन फ्रैश एयर दे विच खड़ के तैनू असीं सद्दा दे रहे हैं, तू तां विंडो विच भी नहीं 5 मिनट खड़ के फ्रैश एयर लै सकदा। फिर भी तैनू 4 सफेरा देखना पैंदा भी मैनू कोई मार ना देवे। तैनू मौत दा डर, सानू कोई मौत दा डर नहीं। असीं तली ते हत्थ ते जान रख के आए हैं। असीं अपनियां भैणां भरावां नू ये कहने आ, मालक भागो बनो, मालक माता गुजरी बनो। जेड़ी कहंदी सी माता गुजरी मेरा ना गुजरी, मेरा पल पल गुजरी मैंने नाल पल पल गुजरी। सच्चे पातशाह ने उसनू भी इन्नी शक्ति दित्ती सी। भैणों तुसीं डरो ना, मरना एक बारी मरना। जे असीं मर जावांगे सानू कोई आजादी मिलूगी, असीं अपने देश के नां ते अपना नां कुर्बान कर जावांगे। असीं जे उस तरह मर गए सानू किसी ने याद नहीं करना। इस तरह ही मोदी दे नाल होना हैगा। मोदी दे किसी ने दीवा भी नहीं जगाउणा। साडे शहरजादियां देख लो किस तरह मेले लगदे हैगे, किद्दां उत्थे मेले लगदे गुरुद्वारे दे विच। मोदी दे किहड़े जन्म कीते हैगे, किहड़े ते कोई दीवा चढ़ाउण भी नहीं चाहुंदा हैगा। उत्तां फिर
जिंदाबाद साडे हक इत्थे रख साडे हक इत्थे रख साडे हक इत्थे रख ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮਤ ਭਾਗੋ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ उधर भी ऐसे व्यक्ति आया जाता उधर भी ऐसे और मोदी सरकार मोदी बहुत है तो बाहर की उन्होंने जाके मिलन नहीं किया मैंने तो बहुत दुखी गल होनी कभी भी बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया किसी भी सोशल मीडिया से कि किसान उत्ते इन्ने चिरों तो बैठे ने ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद नो फार्मर नो फूड नो फार्मर नो फूड नो फार्मर नो फूड गली गली में चोर है मोदी कुत्ता चोर है गली गली में शोर है मोदी कुत्ता चोर है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी हाय हाय किसान मजदूर एकता जिंदाबाद नो फार्मर नो फूड नो फार्मर नो फूड काले कानून बंद करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भले सो निहाल सत श्री अकाल Okay, can I ask Dari Bassi to come towards this as well? Dari Bassi to come towards me as well, and then we're going to have one or two. Dari Bassi. ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੋਂ ਭੈਣੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ 15 ਲੱਖ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤਬੰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। Right, I've got Singh, Chingal. I get the surname now, it's very difficult. Malpreet Singh is enough. Malpreet Singh from Kohinoor, from the ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਕੋਹੀਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ RSS ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OIC ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਗਵਾਹ ਆ, ਜੇ ਬੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਫਾਸਿਸਟ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਣ ਲਾ ਲਈ। ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਓਏ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਬਨ ਲਾਇਆ ਹਰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਵਕੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ।
कि यह संघर्ष जितते हैं। अगर यह संघर्ष हार गया पूरी दुनिया दी कौमां दी हार हो जाऊगी। अज भारतीय लोगों को सलाम आ, भारतीय किसानों को सलाम आ कि जिन्हें जड़े तकड़े हो के बेशक किसी वेले किसी वेले जावर दे नाल टकराउंदे भी रहे आ, बेशक अज दे समय शांतमई घोल भी करन विच अगे आ। ये सानू सारे जिहड़े गौरिया साडे सारे गुरुआं ने दस्से आ। बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा मैनूं टाइम दिता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं एक गल होर साझी करा कि पक्षों वखरियां जथेबंदियां इंडियन वर्कर एसोसीएशन ते सिख जथेबंदियां इस तो बिना कम्युनिस्ट पार्टी ते पक्षों वखरियां जथेबंदियां आके मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबाग सिंह संधू जी है इत्थे लागे। Dilbag Singh Sandhu, is he nearby? While he's coming, can I just remind everybody that on the 6th of November, there's going to be a big rally, a demonstration in Glasgow to do with COP26. Can I request all the organisations here from Glasgow, from Scotland, to participate in that? 6 November ਨੂੰ ਇੱਥੇ demonstration ਤੇ ready ਹੋਣੀ ਹੈ। अपने झंडे with your banners, come and participate. What time? टाइम फिर दस देंगे। टाइम दस दें तलोचन से मना करना और लोकल जथेबंदियां सारे दसे जाएगा। 6 नवंबर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाके हिस्सा लेना ਤੁਸੀਂ बहुत चढ़ के हिस्सा लेना। दिलबाग सिंह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जयकारा जोर ना छड्डो जरा बेशक दी प्रसाद खादे नूं देर होई आ फिर भी बड़ा मुड़ जाके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पंजाबी सह सभा गलासगो ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ जबर के खिलाफ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ सबर का मुजाहरा सारे अपने जिन्हें भी गलासगो निवासी और बाहरले ਜਿਹੜੇ भी दोस्त मित्र आए हैं, मैं समझदा है कि ये जबर के खिलाफ सबर का ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मुजाहरा हो रहा मोदी सरकार के अगेंस्ट। और बहुत अच्छी गल है कि तुसी सारिਆਂ ने बहुत वधिया टाइम कढ़िया और मोदी नूं जरूर पता लगू, ਉਹਦੇ चेले जरूर बालसे इत्थे आए आ वेखण होणगे कि गलासगो के जिहड़े लोकां ने संगतां ने इत्थे जिन्ने भी आ सकते सी अपना टाइम जिहड़ा ओह कढिया इहदे विच। और असीं सारे चाहुंदे आ कि जिहड़े 3 काले कानून आ मोदी नूं ओह वापस लेने चाहिए आ। 2-3 बंदियां नूं खुश करन वास्ते उहने सारे दे सारे हिंदुस्तान के किसान जिहड़े उहने मोर्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उहने टंगे पए आ। असीं उहनूं फिर भी आखांगे साडा अपना सारिਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ सुनेहा आ कि मोदी नूं अपने काले कानून जिहड़ा ये चौकीदार सिर्फ 3 बंदियां दा नहीं करना चाहिए। वो मुल्क का प्रधानमंत्री आ, वो 1.5 अरब पापूलेशन का प्रधानमंत्री आ, कल्ले 3 टब्बरां दा नहीं गा मोदी जिहड़ा आ। उन्होंने दूजियां दा भी सोचना चाहिए प्रधानमंत्री नूं। साडा इत्थों गलासगो तो अज इहो ही उन्होंने सुनिया कि जिहड़ा गैंग बनिया अडानियां दा अबानियां दा जिहड़ा अडानियां दा गैंग बनिया आ, वो जिहड़ा किसानां नूं लोकां नूं लुट रिहा। और आओ आप सारे दे सारे जिन्ने भी दोस्त मित्र गांव भी जिन्ना चिर ये साडा मोर्चा किसान मोर्चा कामयाब नहीं होता, सानू जिहड़ा किसानी दे झंडे थले आण के सानू किसानी दा झंडा चुकना चाहिए। पंजाबियां दा इंडियन सारे फार्मर दा साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारियां दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। For a very short message and greetings and solidarity, Ajit Singh, they've come all the way from East London. Mind you, I've come just this far, I come from West London, but he's from East London. Ajit Singh. Very short message. Bilkul. Hello. मेरे बहुत ही सत्कारयोग भैनों भरावो, मेरी धीआं ते पुत्रो, मैं जिद्दां बहुत खुश हाँ जिहड़ा तुसीं अज एक खास मकसद लई इकट्ठे होए हो। हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा पिछले काफ़ी देर तो 1 साल तो तकरीबन जी स्ट्रगल चल रही है, वो हिमायत में इकट्ठे तुसीं होए हो।
मैं ज़्यादा गलबात नहीं करनी क्योंकि साढ़े सत्कारयोग बुलारियां ने ऑलरेडी सारी कुछ एक्सप्लेन कर दिता। एक दो नारे लाऊंगा उस तो पहला एको ही गल जी वो मैं करनी चाहना। हिंदुस्तान की फाशी सरकार ने सानू धमकी दी है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ बाहर रहने कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ OIC कार्ड कैंसल कर देंगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आउण तो बंद कर देंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, सानू बंद करके देखण। अज तो 100 पूरे 150 साल पहला साडे गरीब बाबे ने उन्होंने बंद करने की कोशिश की सी, वो रुके आ। उन्होंने उत्थे जाके इनकलाब शुरू किया 1900 जी 12 13 14 15 जी लहर सी। हुण भी असी मोदी ਜਿਹੜੇ फाशिस्ट इत्थे दे हैगे आ उन्होंने कहने आ तुसीं साडे वीज़े कैंसल करो, असीं आवांगे, असीं उही काम करते रहांगे जो असीं करते रहे हैं। दूजी गल है भी जे साडे वीज़े कैंसल करोगे ਜਿਹੜੇ उत्ते साडे करोड़ां ही ਜਿਹੜੇ भैन भरा आ ਜਿਹੜੇ डटे पए आ उन्हां दे वीज़े भी कैंसल कर देवोगे। अज जिहड़ी सानूं लोड़ आ ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ कर सकते आ। अज लोड़ आ डट के खाण दी, संयुक्त किसान मोर्चा डट के साथ देने दी। जे असीं फर्ज किया ये किसान मोर्चा असफल होंदा तो साडी सारी जिंदगियां इत्थों भी खत्म होणियां। हुण जिहड़ी साडी जिहड़ी सारी हिम्मत है, जिस तरह साडे साथी बुलारे ने सारे ने दस्सिया कि सानूं डट के उन्हां दी हिमायत करनी चाहिए है। इन्ना ही कहना होया मैं एक दो नारे लावांगा तुहाडे साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी दी फाशी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी दी फाशी सरकार मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। Right, Raj, just to wake us up a little bit more, just in case we weren't awake. We will be packing at 2 o'clock, so if you are thinking, how long is this going on? 15 minutes. We've got 15 more minutes. I've got 2 short messages of solidarity, and then... Okay. Right, Raj. बड़े ही सोने मोदी सरकार, मोदी सरकार, काले कानून, काले कानून, इनकलाब, इनकलाब, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, काले कानून, काले कानून, किसान मजदूर एकता। नो फार्मर, नो फार्मर, नो फार्मर, बड़े सोने हारे। We got people who come from London, from Derby, from Birmingham, from Leicester, from Bradford, all parts of Scotland. Now I'm going to ask one of those comrades from Birmingham, Bhagwant Singh, to come and say a few words. सब तो पहला मैं जेड़े अज मेरे वीर मेरे दोस्त सारे लोग जो आए ने उन्होंने सब का तह दिलों धन्नवादियां जिन्होंने इस अज मुजाहरे नूं कामयाब किया। तुसीं अपने हक्कां लई जो लड़दे पे हो इस नूं लुट्टण लई वो बहुत तत्पर ने। जिहड़ी प्राइवेटाइजेशन की जिहड़ी चली आ निजीकरण की जिहड़ी असल पॉलिसी हैगी आ यह बिल गेट की अमेरिका की या UN की IMF की वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियां जिस दे थले ये मोदी सरकार ये मजबूर है। इन्होंने जो अपन जिन्हें मजबूर करते हैं पिछे इन्होंने पिछड़ी ताकत इन्होंने कर नहीं दे रही। असल ये गल समझनी पऊगी पर असी अपना पूरा जोर ला के उन्होंने जिन्हें पिछे भी बैठे ने उन्होंने हटावांगे तो जो निजीकरण हो रहा है जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है इसनूं पूरी तरह रोकांगे। सानूं ये समझण की लोड़ पैनी है कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह कर रहे हैं, किस तरह इन्होंने साडे अज इत्थे इंग्लैंड अमेरिका दे अपने स्कॉटलैंड दे विच इत्थे एनवायरनमेंट के उत्ते भी मीटिंगां चलदियां पईयां जिहदे विच वर्ल्ड दीयां 26 मुल्क डायरैक्ट इनवॉल्व ने ते 110 के करीब जिहड़े कंट्री ने इनवॉल्व ने। तुसीं ये जिहड़ियां एनवायरनमेंट नूं किस तरीके नाल किस तरह मल्टी कारपोरेट खराब कर रही हैं उसकी सब तो वड्डी उदाहरण तुहाडा पंजाब है।
जिथे हम धरती में लोगों को भी कैंसर है उत्थे धरती में भी कैंसर हो चुका। वो इन मल्टी कारपोरेट जिहड़ियां अज इत्थे इकट्ठियां होकर बहाने ला ला के सिर्फ शो करन इकट्ठियां हुई ने कि असीं एनवायरनमेंट नूं बचाउणा आ। एनवायरनमेंट नूं बचाउणा तां तुसीं बचाउणा आ, साडे मुजाहरिਆਂ ने बचाउणा, साडे जोर ने बचाउणा आ। क्योंकि इन्हां वल्लों कोई इन्हां मल्टी कारपोरेट जिहड़ियां हैगियां अपने कैमिकल फैक्ट्रियां ने इन्हां दी बड़ी बड़ियां जिहड़ियां बिना सोचे समझे जिहड़ी दवाइयां इत्थे इन्हां मुल्कां 'च नहीं वरत सकदे, वो साडे पंजाब दे विच जाके वरतदे ने ते उसदी तबाही करदे पए ने। ते जिहड़े इन्हां ने मोदी ने 3 कानून लिआंदे ने वो सिर्फ ते सिर्फ इन्हां मल्टी कारपोरेट्स दे इशारिਆਂ ते लिआंदे ने। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो ये लोग चाहते मैं सबका धन्यवादी हाँ बहुत। थैंक यू वेरी मच। Can I now ask Jaspal Singh Khera to come and pass on his solidarity for a couple of minutes? Jaspal Singh Khera, and if Rajinder Banks from Derby can also stand by, please. भैनों, भरावो, नौजवानों, वीरों, बजुर्गों, आओ सब तो पहला आप सतगुरु की बाकी हुई फतेह को बुलंद करिए। कोई भी रस्ता ऐसी ना हो जी बात ना हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो मजारा है हिंदुस्तान कांग्रेस दौर में नरेंद्र मोदी अमेरिका खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ दम जो है वो मुट्ठी विच लिआंदा पिया है। साडे भैन भरा बजुर्ग दिल्ली दियां जूहां दे उत्ते बॉर्डर दे उत्ते बैठे तकरीबन 11 महीने हो गए हैं। उस तो पहला 2 महीने पंजाब दे विच मुजाहरा चलिया, लेकिन सारियां सरकारां कुंभकर्ण की नींद विच सुतियां पईयां हन, जिन्हां दे टस तो मस नहीं हुई। लेकिन जे जिमीदार है, मजदूर है, तो सारा जिहड़ा सिस्टम है वो चलेगा। जे जिमीदार खत्म हो गया, मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। कैपिटलिस्ट जिहड़े ने वो किन्ना चिर अपने हत्थी मेहनत करके हिंदुस्तान नूं बचा लेणगे। इस वास्ते असीं मोदी सरकार नूं समूह यूके दियां और सारी वर्ल्ड दियां जिन्नियां भी एसोसीएशनस जिहड़ियां साडे नाल संपर्क कर रही हैं, संबंधित हैं, वो ये चैलेंज करते हाँ कि तू सिर्फ होर 2 साल ही है, पर एक जिंदगी का एक सवास ही जिंदगी का है। उस तो पता नहीं भी मुड़ के किसी को साह आना या नहीं आना। एडियां एडियां डींगा ना मार जिस दे नाल तो आउंदे सालों दे विच तेरी सिक्योरिटी भी जब्त हो जाए और तू किसी को मूँह दिखाउण दे लायक ना रहे।
ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਐਪਲ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। And the very last speaker, Rajinder Bhai. ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 52% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਬੋਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। Right, can we do a big round of applause and thank the organizers of this protest? They have stood silently trying to assist us in organizing this, and we are, unfortunately, I'm also going to have to apologize to a number of people who haven't been able to speak because the police has indicated that we have to conclude at 2 o'clock and we're literally 1 minute away. So my apologies to all those who haven't been able to speak. Can we thank the Indian Workers Association, the Gurdwara Guru Granth Sahib, Glasgow, well these are mostly from Glasgow so I won't say that, Central Gurdwara Sahib, Guru Nanak Sikh Temple, Punjabi Sahib Sabha, Shri Guru Ravidas Community in Scotland, Dr. Ambedkar Mission Society, Indian Workers Association Glasgow, Walk for Farmers Scotland Group, Scottish Indians for Justice, Communist Party of Britain, Association of Indian Communists, Unite the Union, YCL, and many, many others. Like we had Kiranjit Kaur, we got other people who come from London as well, who are sleeping outside the Indian embassies. We need to support them. And many organizations that have spoken here, can we have a big round of applause for all of them, please? And a big cheer. Thank you. Thank you. Thank you. They're small words but mean a lot. Not that somebody is going to wake us up. Hello again. So before we part, shall we make our voice heard again, once again? Yeah? No. किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, कानून, 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 किसान एकता, किसान एकता, साडे हक, साडे हक,
ambitions and will instead keep at the forefront of their minds the grave threat to our one shared earth and their responsibility to protect our planet for generations to come. We come together to hold the negotiators in our hearts, that they might have the wisdom, compassion and courage necessary to work together to safeguard the future of humanity and all life on our precious, fragile planet. Thank you, Rose. My name is Maureen and I'm Director of Interfaith Scotland. May I also extend my warm welcome to all of you here in Glasgow and present online. A heartfelt acknowledgement also to all those who cannot be here today with us, and particularly to the Indigenous peoples of the world, whose traditional wisdom has held our planet safe for so long. I stand here with you today at a moment of crisis. Our world is in crisis, and we are in crisis. This is a deep spiritual crisis. But I also stand here with an absolute conviction that our collective thoughts, prayers, and actions can and do make a real difference. And I thank you all for being here. We will create a more just, sustainable, and beautiful future together. Powerful leaders have come here to make decisions that will impact on all of us. And this vigil, held at the launch of Scottish Interfaith Week 2021, is a powerful moment of solidarity. And I hope we will look back on this moment as a pivotal turning point for the human race and for life on Earth. We all can take care and have a chance to change and feel united. That's the most important thing. We can do it for ourselves and for other people. That's the idea of this Thomas Walk. Thomas Walk. Yes, sometimes I feel very tired, sometimes I feel absolutely motivated. This blessed tree and this painful sapling has been carried by some of the Yes, come on, yes. I have to repair it every day. Every day I'm welding a machine with me. On our bicycles, we have 2 bicycles, it's repaired. So that's the idea. We have to take care and repair all of our earth, of our contact with other people, to be in balance. Of stainless steel. I make it with my son, and we take also part up to Liverpool, and we walked and cycled from Germany to Liverpool together, and then he is going back for studying, and my wife came, and then we do the journey through Ireland up to Scotland and Glasgow, COP26. From Germany to this here, yes. Sometimes cycling, when the distance is very long, put it on the bicycle and also cycle. Sorry? We put this? Walking and cycling. And in the city now we have the trailer too. It's not possible.
Zai da na muka abin da muna magana da
Yeah. No way. Okay. Hello. How's it been working on arm? Oh, right, okay. Oh, right, okay. I'm not